Hi everyone, good evening. Let's go ahead with our class today. We are going to discuss Aphorism 65 today. So far, we discussed in the last class about Aphorism 64. That was about primary action and secondary action. And we all know that the secondary actions are of two types: secondary counteraction and secondary curative action. In this aphorism 65, we will be learning the 8 examples of primary action and secondary counteraction. Because, as such, the examples of the secondary curative actions can be seen with the treatment of patients with law of similia. And that is the desired response we all doctors wish to see. So those examples can be live every time with us if we are using the law of similia with our case. So just to have a recap with the aphorism 64, as we discussed, primary action is a conjoint action. When you say conjoint action, it means where two energies are interacting. One energy is of the medicinal power, and the second energy is the vital force. One plays as an active role, the other plays as an passive role. The medicinal power plays as active role, and the medicinal power, when playing the active role on the vital force, so this vital force plays a passive role, allows the medicinal power to exert all its action and express vital force, express through the through the body systems, all kind of signs and symptoms in the different part of the body as well as mind. So, if Alert we from no backups for 158 days. so in that case, we should be able to learn that these two actions are always and always, without any exception, are seen with the antipathic way of treatment, because those physicians, they ignored the secondary action of the vital force. They could not gauge, they could not sense, they could not observe that the living organisms, they respond, they react to the power exerted on the living entities, living organism. And because of that, they could not really understand the aggravations occurring later on. And they felt the dose is to be altered, and they used to give more and more dose to produce the primary action, and vital force kept on producing the secondary counteraction. The secondary counteraction is a single action which is exclusively by the vital force against the medicinal power exerted on the vital force in primary action. So the secondary counteraction will be depending on the dose given for the primary action to this organism, and the power of the vital force to react back.
The cases which are repeatedly treated with the antipathic mode of treatment with high and higher doses, after some time when vital force power is exhausted, it is possible that that vigorous secondary counteraction may not be coming. So let us just have these examples. We have got 8 examples which are going to teach us the primary action and the secondary counteraction. Let us take these examples one by one in Aphorism 65. Examples of A are familiar to all. When he says examples of A, he is referring to Aphorism 64, in which primary action is followed by the secondary counteraction. And he says that everyone is familiar with what is happening. So he is giving the straightaway examples. A hand bathed in hot water is at first much warmer than other the other hand that has not been so treated, primary action. But when it is withdrawn from the hot water and again thoroughly dried, it becomes in a short time cold and at length much colder than the other. So every one of us can do this, can experiment this. We just do have to one thing, only dip our one hand in the sufficiently warm water, which is not going to burn us, but we can really tolerate it, and put it there in the warm water for some time, and then remove it, wipe it, dry it up. Now, initially, what we will be finding, the hand which is in the warm water has gone much warmer comparing to the other hand, but as the example says, after some time it becomes in a short time cold, and after some little more time it becomes colder. It's a relative thing. You have to compare with your other hand which was not in the warm water, and you will find the hand which was there for some time in warm water, which remained warm for some time, but then after some time it is becoming cold, and even colder after some time, and it takes little more time to get equally warm both the hands. So what we are seeing here initially, when we are putting the one hand in the warm water, and after some time when removing it, it is now warmer than the other hand. It's a primary action. But after some time, it gets cold in comparison to the other hand, which was not in the warm water. It gets cold, and even colder after some more time. It's a second reaction. Like this, we have another example, example number 2. A person heated by violent exercise is afterward affected with chilliness and shivering. If any one of us, these are the examples every one of us can really perform, do anywhere. I wish such examples can be repeated in the department of the organon of the colleges to make it a real practical thing, at least for the first year BHMS students, to exactly learn, rather get experienced about it. So what all I have to do is, second example, if I do violent exercise and get heated,
But then after some time, it's a prime reaction. But then after some time, what is going to happen? I'm going to feel chilly. I'm going to feel cold. It is generally happening nowadays in the every home that when the ladies of the house, they are working in the kitchen, and because they are working before the heat, they get too much heated, and when they are coming back to a AC room, they find as if AC is not working, and they want that AC has to be reduced in the temperature, despite the fact the other person sitting in the room is rather feeling quite okay or little chilly. And if you just increase the chilliness, reducing the temperature, after some time, this same lady who was too much heated because of the working in the heat gets chilled and feels very chilly. So these are the common example we can see, and the example quoted by Dr. Hellman in Aphorism 65 can always be repeated. First two examples we can repeat anytime, anywhere. Coming to the third example, to one who was yesterday heated by drinking much wine, primary action. Today, every breath of air feels too cold, counteraction of the organism, secondary action. So, though not advisable to be repeated anywhere, any place, but those who are in the habit of having such kind of taking wine, one can get their experience and learn from their experience that initially if they are taking wine, take wine, whiskey and all, they are all some different thing. Animal advised their wine. So feeling heated on the day taken this wine, rather they feel very hot breath. But next day, when they just go into the hangover, what they find that even their breath is cold. That is a counteraction. That is the second reaction. Example number 4, an arm that has been kept long in a very cold water is at first much paler and colder. That is a primary action. We first example we learnt warm, which became cold. Now this fourth example is when we put our arm in the cold water, then what happens? Then it gets paler and colder. It's a primary action compared to the other arm. But removed from the cold water and dried, it subsequently becomes not only warmer than the other, but even hot, red, and inflamed. That is a secondary reaction of the vital force. If it is extremely colder, it is like you got frostbited. It is as if that you got frostbited. And same kind of symptom develop after some time in such a cold water, your arm is, which became paler and colder. When you remove and dry it after some time, it is as if frostbited. That is a second reaction. When you say frostbited, it means it gets rather warmer, and not even warmer, it gets inflamed. When you say inflamed, it has got five signs, you understand that. As in inflammation, we always see. So these are the four examples which more or less can be observed in a
homely settings, and we can learn from their experiences how this secondary action is observed to really get aware, to really get experienced that it is not that just in the book that our body system reacts back, and that is called secondary counteraction. Let's take some more example. Example number 5, another example which almost invariably we all do, but then we are not observing. This example says excessive vivacity. When you say vivacity means too much liveliness, too much energeticness, too much excitement follows the use of strong coffee. When you take a cup of coffee, you feel very vivacious, you feel very excited, you feel very lively. That's a primary action because of a strong coffee. Mind it, it's a strong coffee. Like those who are in a habit of taking black coffee, and because they just want this kind of excitement. But then sluggishness and drowsiness remains for a long time afterwards. But as soon as this primary action is over of the coffee, strong coffee, followed by so much of sluggishness and dullness, drowsiness, until and otherwise you take another dose of strong coffee. If that this be not always again removed for a short time by imbibing fresh supply of coffee, means if you have not taken again coffee, that is how you palliate. Another example 6, after the profound stupefied sleep caused by opium, as I told you earlier also, those who are in habit of taking sleeping pills, it is more or less a type of a derivative of opium or opium like substance. They produce so much of sleepiness in the primary action, but then it follows the following night will be all the more sleepless. So in the secondary action, you get more sleepless, and until and otherwise you repeat the tablet, which is make you habitual, which make you habitual for really keep on taking such tablet. After the constipation, another example of opium. Example number 7. After the constipation produced by opium in the primary action, diarrhea ensues in the secondary action. So it produces so much of diarrhea. Once you are producing constipation, nowadays I tell you, those who are suffering with a lot of diarrhea cases, those who are suffering with diabetes, and they are on anti-diabetic allopathic treatment. What is that? This is sulfonylurea and such drugs they use. It has got a capacity to press the beta cells of the pancreas to produce more insulin to be effective and reduce the blood sugar. But then, since too much of insulin is produced by the beta cells under the influence of such allopathic drugs, the system becomes poisoned with too much of insulin. One of the side effects of too much insulin, one of the toxicity of too much of insulin is reducing diarrhea. In such cases, when they suffer so much of diarrhea under the influence of allopathic medicine or maybe any other infection, now people are in a habit of taking one such medicine, which is actually again a opium derivative, which actually sluggishes the peristaltic movement of the intestines, and it seems as if that you are able to hold on your diarrheic conditions. But as soon as it is so, you may feel that it is stopped, you got constipated, but then
After some time, it is going to produce diarrhea again. So we got two examples of the opium. One is regarding the sleep and causing sleeplessness. Another is trying to get constipated, again produce severe diarrhea. Another example and the last example, and after purgation with medicines that irritate the bowels, constipation of several days duration ensues. Then the last example says there are many medicines which has got a capacity to produce diarrhea, that is purgative drugs. They are also given for many things, especially those who are suffering with constipation. They are treated with purgative medicines. Many other conditions that for skin conditions, allopathic usages produce diarrhea. Now, in that condition, when you use such kind of purgative drugs, initially they produce so much of diarrhea, but then when the action is over, this primary action is over, in the secondary counteraction, it produces constipation. So, like this, we get some 8 examples to understand. We can, they are most common examples and will quote it. Purpose that everyone can notice it. One who is not a doctor can also notice it. Those who are patients, they can also notice it and tell you. You can make them aware that these are the side effects which invariably comes. We all need to learn this, make our patients aware, make our students aware that this is what the antipathic treatment do. You cannot really feel that it is good one. At times we can use it because having such an idea will push you to use it again and again and harm your patients. So my request is do not use such kind of antipathic way of treatment even at times, not really required. So at the end of the aphorism 65, Hahnemann says, and in like manner, it always happens after the primary action of medicine that produce in large doses a great change in the health of a healthy person. That it exact opposite when has been observed there is actually such a thing is produced in the secondary action of our vital force. And then repeats again. This is what happens with the large dose. Initially better, but then in the counteraction, in the reaction of the vital force, it really goes back to worse. It is going to be worse and worse and worst. So not to be utilizing such kind of thing. हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है. बहुत सारा हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमको ये समझना जरूरी है कि एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में फाइनली होता क्या है. बहुत बार जब इस तरह के ट्रीटमेंट चूज किए गए तो हुआ क्या, हुआ ये कुल मिला के कि एक बात नहीं ध्यान रखी गई. ये नहीं सोचा गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सब लिविंग बीइंग है. ये किसी भी एक्शन पे रिस्पॉन्स करते हैं, किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड बैक करते हैं. किसी भी तरह के अगर आपने उसको किसी तरह से छुआ है तो रिस्पॉन्स आएगा वापस. अगर ऐसी स्थिति है तो हमको ये समझना चाहिए था कि अगर एक दवा दी जाएगी जो कि अपना एक इफेक्ट एग्जर्ट करेगी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके रिस्पॉन्स में कुछ कहेगा जरूर, कुछ बोलेगा जरूर, कुछ रिएक्ट बैक जरूर करेगा. जैसा कि हमने अफोरिज्म 64 में जाना था कि इस तरीके से 2 तरह के रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं. एक जिसको कि हम प्राइमरी एक्शन कहते हैं और दूसरा जिसको कि हम सेकेंडरी एक्शन कहते हैं. प्राइमरी एक्शन क्या होता है? प्राइमरी एक्शन एक 2 फोर्सेस के इंटरेक्ट करते हुए होने वाला एक एक्शन है जिसको हम कंजॉइंट एक्शन कहते हैं. एक ऐसा एक्शन जिसमें 2 फोर्सेस मिल करके एक दूसरे के साथ सामंजस्य करके एक दूसरे के साथ एक इंटरेक्शन करके
एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, एक एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो इसमें दो फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक तो वो मेडिसिन की पावर है, उस दवाई की ताकत है जिसको कि दिया जा रहा है ऑर्गेनिज्म, और वो किस पे रिस्पॉन्स करती है? वो वाइटल फोर्स पे रिस्पॉन्स करती है। अगर मॉडर्न फार्माकोलॉजी में आप जाएंगे तो ये वाइटल फोर्स की बात को समझना आसान होगा, क्योंकि आज वो लोग बहुत सी दवाइयों के किस तरह से एक्शन एग्जर्ट होते हैं, और वो रिसेप्टर्स हैं, और वो रिसेप्टर्स के थ्रू कैसे काम होता है, उस तरह की बहुत सारी मॉलिक्यूलर बेसिस पे दवाइयों के एक्शन होने के तरीकों को देखा समझा गया है। तो उसको पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हेनमैन ने बहुत अच्छा कहा था कि वाइटल फोर्स पे एक्ट करती है दवा। तो यहाँ वाइटल फोर्स पैसिव हो जाती है और दवा की पावर को अपना एक रोल प्ले करने देती है कि किस तरीके से क्या होने वाला। ऐसे सर्कमस्टांसेस में कुछ इस तरीके का होता है कि पूरी दवा की पावर अपना ताकत को एग्जर्ट करते जाती है और वाइटल फोर्स उसको एक्सेप्ट करता जाता है, होने दो, इट्स लाइक ए स्प्रिंग। तो जब दवा की ताकत कमजोर होनी शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है वो पावर, अब यहां पर एक सिंगल एक्शन स्टार्ट होता है, ओनली एंड एक्सक्लूसिवली बाय द वाइटल फोर्स। क्या? जैसे कि स्प्रिंग वापस चलता है दवा घटने के बाद, इसी तरीके से वो वापस रिएक्शन डेवलप होता है, वाइटल फोर्स का रिएक्शन होता है, सिंगल एक्शन होता है एक तरह का, और इसको हम सेकेंडरी काउंटर एक्शन कहते हैं। सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन भी होता है, जो कि वही होता है जहां पर लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमको ये समझ लेना है कि जब हम एंटीपैथी वे में ट्रीटमेंट करते हैं किसी का, तो वहां पर एक प्राइमरी एक्शन होगा, प्राइमरी एक्शन लॉ ऑफ सिमिलिया की दवा यूज होगी, उसमें भी होगा। लेकिन एंटीपैथी में क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, और उसके एग्जाम्पल को हम अफोरिज्म 65 से सीख लेते हैं, तो हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो प्राइमरी एक्शन में क्या होगा कि एक कंजॉइंट एक्शन होगा और उसके बाद में काउंटर एक्शन होगा, वो सिंगल एक्शन होता है वाइटल फोर्स का। तो हम अगर इसके एग्जाम्पल को देखें 65 में, तो हमें करीबन 8 एग्जाम्पल हेनमैन ने यहाँ पर हमारे को सिखाने के लिए बताए। ये 8 एग्जाम्पल इस तरीके के हैं जिसको कि हम अपनी डेली लाइफ में, बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो हम खुद कर सकते हैं, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व तो हम लगभग सारे ही एग्जाम्पल्स को कर सकते हैं, तो हमें आम तौर पे ये बातें देखने सीखने को मिल जाएंगी। क्यों ये ज़रूरी है इस तरह के एग्जाम्पल को देखना समझना? ये जानने के लिए कि एंटीपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट से क्या होता है। अगर इस तरह के एग्जाम्पल जो कि कॉलेज में डिपार्टमेंट कॉग्नॉन में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को करवाए दिखाए जा सकते हैं, तो ये शायद बहुत अच्छा तरीका होगा सिखाने बताने का। शायद सब नहीं करे जा सकते, लेकिन जो भी किए जा सकते हैं उनको किया जाना चाहिए, और जो नहीं किए जा सकते उनको ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। तो पहला एग्जाम्पल हमको क्या मिल रहा है? पहला एग्जाम्पल हमको मिल रहा है जिसके अंदर कि क्या किया जा रहा है कि दोनों हाथ को गर्म पानी में डालते हैं। प्राइमरी एक्शन में क्या होगा? एक हाथ ज्यादा गर्म, एक हाथ कम गर्म। लेकिन जब हमने ज्यादा गर्म वाला हाथ जो हमने गर्म पानी में डाला था, उसको अगर हमने साफ कर लिया, क्लीन कर लिया, ड्राइड अप कर लिया, तो थोड़े समय के बाद क्या होगा? थोड़े समय के बाद में वहां पर हमारा हाथ देखने में होगा कि हमारा हाथ गर्म हो जाता है, और वो वाला जो गर्म हाथ था हमारा, वो अब ठंडा होना शुरू हुआ। और एक समय ऐसा आता है कुछ समय के बाद कि जो अनअफेक्टेड हाथ था, जिसको हमने गर्म पानी में नहीं डाला था, वो एक तरह से हमको ऐसा मिलेगा ज्यादा गर्म है, और दूसरा वाला ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ये क्या हुआ? ये उसका सेकेंड रिएक्शन हुआ। ये एग्जाम्पल हम एनीवेयर एनी प्लेस प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में एक्सरसाइज की बात करता है कि हम बहुत वायलेंट एक्सरसाइज करें तो हम बहुत गर्म हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद जब हम बैठ जाएंगे तो सेकेंडरी एक्शन में हम कहीं ना कहीं ठंडक, चिलीनेस जैसा फील करेंगे। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल इसके साथ का बताता हूँ। आजकल जो हो रहा है, घरों में जो लेडीज हैं
वो अपने किचन में काम करती हैं और वहाँ बहुत हीटेड हो जाती हैं गैस के आगे काम करती हैं। और जब वो एसी रूम में आती है तो उनको लगता है जैसे एसी चल ही नहीं रहा, इतनी गर्मी क्यों हो रही है, भाई इसको ठंडा करो, एसी को जरा ज़्यादा ठंडा करो, टेम्परेचर कम करो। ऐसा किया जाता है। थोड़ी देर के बाद ही एक सिचुएशन डेवलप होती है जिसके अंदर उनको ठंड लगनी शुरू होती है। तो ये क्यों है? क्योंकि एक प्राइमरी एक्शन प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद एक सेकेंड रिएक्शन प्रोड्यूस हुआ। इसी तरह हमारे को तीसरा एग्जाम्पल मिलता है। जो लोग वाइन पीने की आदत रखते हैं उन लोगों के अंदर ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि वाइन पीने के बाद, वाइन, विस्की एंड ऑल दैट, इनकी सबकी अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्सटेंस से प्रिपरेशन होती है, अलग अलग क्वांटिटी का और क्वालिटी का फर्मेंटेड अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। सबके अपने अपने एक्सक्लूसिव इफेक्ट भी होते हैं। ये एज ए डॉक्टर हम सबको जानना सीखना चाहिए। यहाँ मैंने वाइन से एग्जांपल दिया है। जो लोग वाइन पीते हैं उनमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि जिस दिन पिया उस दिन बड़ा ऐसा लगा जैसे शरीर गर्म, सांस भी गर्म, लेकिन अगले दिन सुबह जब वो हैंगओवर में होते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनकी सांस भी ठंडी आ रही है। कई बार आदमी डॉक्टर को कंसल्ट करने लगता है कि मेरी सांस इतनी ठंडी क्यों आ रही है। ये एक तरह का सेकेंड रिएक्शन है, सेकेंडरी काउंटर एक्शन, एक रिएक्शन है। इसी तरह का हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हम अपनी आम को, पहले तो हमने गर्म से ठंडे में किया था, अब हमको ठंडे से गर्म में करके देखना है। बहुत गर्म पानी में हम हाथ नहीं डाल सकते, लेकिन हम बहुत ठंडे पानी में हाथ डाल सकते हैं। तो अगर हमने थोड़ा सा ज्यादा ठंडे पानी में अगर अपना हाथ रखा, आम रखा, तो वो हाथ प्राइमरी एक्शन में क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा और जितना वो रेड दिखता है उससे वो पेल दिखना शुरू हो जाएगा, बड़ा ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा जैसे यहाँ पे खून ही नहीं है। ये हुआ उसका प्राइमरी एक्शन। बट सेकेंडरी एक्शन में क्या होगा, एक ऐसा रिएक्शन बैक डेवलप होगा कि ऐसा लगेगा जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट हो गया, जैसे कि बर्फ ने जला दिया हो, ठंडक ने जला दिया हो, ऐसा हो जाएगा। एक इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी वहां पे, वो इतना रेड हो जाएगा, वो इतना वार्म हो जाएगा, वो इतना दुखने लगेगा, ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाएगा। ये उसका एक तरह का सेकेंडरी काउंटर एक्शन डेवलप हुआ। इसी तरह का हमको एक और एग्जाम्पल मिलता है, कॉफी का एग्जाम्पल। तो हमको बहुत एक्साइटमेंट अपने अंदर, वाइवेसिटी, बहुत लाइवलीनेस, बहुत अपने अंदर ऐसा जैसे कि हम बड़े एनर्जेटिक हो गए, ऐसा कुछ अगर हमको प्रोड्यूस करना है कि बहुत ही ज्यादा उत्साह और उत्सुकता हमारे अंदर आ गई, तो हमने कॉफी पी लिया। कैसा कॉफी चाहिए? स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए। जो लोग बड़ा ब्लैक कॉफी, इस तरह की चीजें पीने के आदी हैं, उनमें ये बातें देखने को मिलती है कि वो बड़े लाइवली दिखते, बड़े ज्यादा उत्साहित दिखते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जेटिक दिखते। कॉफी पीने के कुछ समय तक ही ऐसा होता है, स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने के कुछ समय तक ही ऐसा होता है। जैसे उसका इफेक्ट जाता है वो ड्राउजी, सेकेंडरी एक्शन शुरू हो जाता है, ड्राउजी हो जाएंगे, स्लीपी हो जाएंगे, डल हो जाएंगे। और तब तक वो ठीक नहीं होगा जब तक कि वो इसी तरह की स्ट्रॉन्ग कॉफी एक बार फिर ना पी ले। फिर हमको एक और एग्जाम्पल मिलता है। यहाँ हमारे को दो एग्जाम्पल डिस्कस करने को मिलते हैं रिलेटेड टू दी ओपियम। पहला ओपियम का एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट कॉमन, जितनी भी नींद की गोलियां हैं डेरिवेटिव ऑफ ओपियम या ओपियम जैसी दवा है। गोली खाओगे तो सोओगे, अगर गोली नहीं खाओगे तो अगले दिन नींद नहीं आएगी, वो उसका सेकेंडरी एक्शन होगा। फिर गोली खानी पड़ेगी, हो सकता है ज्यादा डोज की खानी पड़े एक समय के बाद। इसी तरह से ओपियम एक किस्म का कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है। तो जिन लोगों को बहुत सीवियर डायरिया हो जाए, जो कि डायबिटिक्स में इंसुलिन या जो भी दवाएं ली जाती हैं उसको लेने के बाद डेवलप हो सकता है ड्यू टू दी साइड इफेक्ट्स ऑफ द इंसुलिन। और वो लोग भी जब इतना सीवियर डायरिया देखते हैं तो अपने आप को अस्पताल जाने से बचने के लिए कि वो ड्रिप लगाएंगे, क्या क्या करेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि ऐसी दवा आती है जो कि ओपियम डेरिवेटिव होती है, जो बहुत कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को होल्ड कर देती है। बट देन
एक समय के बाद में क्या होगा, जब उसका एक्शन खत्म होता है तो वो ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस कर देता है। तो हमें दो एग्जाम्पल ओपियम के मिलते हैं, एक नींद से संबंधित और एक हमारे बॉवेल मूवमेंट से संबंधित। तो ये बड़ी एक ज़रूरी बात ध्यान रखने की है कि हम हमारे पेशेंट जिसमें लोग इस तरह से कोई भी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो वो ध्यान में रखना चाहिए अपने केस चेकिंग के टाइम में। ट्रीटमेंट हिस्ट्री को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए, उससे हमारे को ये सब बातें और एक्सटेंसिवली सीखने को मिल जाएंगी। फिर एक और एग्जाम्पल हमको मिलता है जहां पर कि परगेटिव्स दिए जाते हैं। बहुत पहले से एक प्रैक्टिस है कि पेट साफ करो, बहुत बीमारी ठीक हो जाएगी। तो पेट साफ करने वाली जो दवाइयां हैं उन्हें हम परगेटिव कहते हैं, जो डायरिया प्रोड्यूस करती है, जुलाब जैसी दवाइयां। तो इस तरह की सभी परगेटिव जुलाब प्रोड्यूस करने वाली दवाइयां हैं, ये जब इनका प्राइमरी एक्शन में ये डायरिया प्रोड्यूस करती हैं, बट सेकेंडरी एक्शन में इनमें कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हमको करीबन 8 एग्जाम्पल सीखने को मिलते हैं जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी काउंटर एक्शन देख पाते हैं। और आखिरी में हनमिन अपनी बात को अफोरिज्म 65 में खत्म करते हुए कहते हैं कि इन लाइक मैनर इट ऑलवेज हैपन्स आफ्टर द प्राइमरी एक्शन ऑफ ए मेडिसिन। प्राइमरी एक्शन के बाद हमेशा ऐसा होता है कि जब लार्ज डोज से इस तरह की हेल्दी कंडीशन में भी अगर किसी को हार्म किया जाए, जो कि इस तरह का एक ऐसा चेंज प्रोड्यूस करेगी, तो उसके एक रिएक्शन में उससे अपोजिट एक सेकेंडरी एक्शन डेवलप होता है वाइटल फोर्स से, और वो बिल्कुल उसका अपोजिट होता है। इसी को हनमिन सेकेंडरी एक्शन कहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है, अपने केसेस में देखना है, सीखना है, बताना है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमें इसको ऑब्जर्व करना है, अगर हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हुए डॉक्टर हैं तो हमें ये अपने केसेस के अंदर ध्यान रखना है। और कई बार इस तरह के सिम्टम्स में हम लोग उलझ जाते हैं, ऐसे सिम्टम्स टोटलिटी में नहीं लिए जाते, इनसे हटके हमको सिम्टम लेने की जरूरत है। तो ट्रीटमेंट हिस्ट्री इसलिए एक्सटेंसिवली जाननी जरूरी है हम सभी प्रैक्टिशनर्स को, कि अगर उसकी वजह से होने वाले कोई प्राइमरी सेकेंडरी सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो वो पार्ट ऑफ द टोटलिटी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक जगह आकर के अपनी इन सभी बातों का एकेडमिक से ज़्यादा क्लिनिकल सेटिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने 64 के अंदर जबकि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी का, और सेकेंडरी का भी काउंटर एक्शन का, उसके एग्जाम्पल हमने सीखे। अब हमारी जरूरत ये आती है, इसी तरह से हमारे को एक बात ये समझनी है कि अगर सेकेंडरी काउंटर एक्शन होता है तो फिर सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन क्या होता है। जो अगला अफोरिज्म 66 है वो हमें सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन के बारे में बताता है। वो कहाँ डेवलप होता है, जहां पर प्राइमरी एक्शन किसी ऐसी दवा से प्रोड्यूस करवाया जाता है जो कि लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर बेस्ड है, जो सिम्टम सिमिलैरिटी पे दिया गया है, ऑपोजिट के बेसिस पे नहीं दिया गया, सिमिलिया के बेसिस पे दिया गया। तो ये अफोरिज्म 66 क्या कहता है, एन ऑब्वियस antagonistic secondary action, however, is as may readily be convinced not to be noticed from the action of quite minute homeopathic doses of the deranging agents on the healthy body. Such kind of secondary counteraction हमारे को बहुत मिनिमम डोजेस में, बहुत लो डोजेस में, जब कोई लॉ ऑफ सिमिलिया के बेसिस पे जब कोई दवा दी जाती है तो वहां पर हमको इस तरीके का काउंटर एक्शन नोटिस नहीं होता है। A small dose of every one of them certainly produces a primary action that is perceptible to a
sufficiently attentive observer, but the living organism employs against it only so much of reaction as it is necessary for the restoration of the normal condition. इसमें हमको अगेन ये बात सीखने की जरूरत पड़ेगी कि क्यों हम लॉ ऑफ सिमिलिया में बहुत कम दवा का इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम दवा से हम वाइटल फोर्स में एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं प्राइमरी एक्शन में, जहां पर एक रिप्लेसमेंट हो जाता है बाय ऑटोमेटिक वे के सिमिलर होने की वजह से, और मेडिसिनल पावर किसी भी डिजीज पावर से ज्यादा पावरफुल होने के कारण प्राइमरी एक्शन में मेडिसिनल डिजीज से अफेक्ट हो जाता है वाइटल फोर्स, और जो डिजीज कंडीशन है, जो नेचुरल डिजीज है, वो वहां से हट जाती है, चले जाती है। ऐसी कंडीशन में किस तरह का सेकेंडरी एक्शन तो होगा, लेकिन किस तरह का सेकेंडरी एक्शन होगा, क्योंकि डोज बहुत कम है। इतनी कम डोज में वाइटल फोर्स इतना ही रिएक्शन करेगी जिससे कि वो अपनी हेल्थ को रिस्टोर कर ले, और उससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। तो इसलिए उसको सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन कहा गया। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इन द aphorism 66, when you give in a very low dose, very small dose, a medicine which is to be used in a homeopathic way in the law of similia basis, when we are going to prove our medicine say in 30 or 200 potency, when it is going to produce some kind of symptomatology, very minute symptomatology is produced, but as such no such secondary reaction develops. And in the cases when you are prescribing the medicines on the law of similia basis, in that case, because it is too small a dose, but then at the same time our medicines are quite powerful than natural diseases. So in the primary action, what takes place? The replacement of the disease takes place. In place of natural disease, the medicinal disease comes, and the natural disease is gone away. Now in the secondary action, vital force will react back only to restore its balance. So it is called secondary curative action. See, when if you read provings, except those who are toxicological symptoms, very less kind of secondary actions are noticed, but generally not secondary actions are not noted, because in such a small dose vital force is not able to produce any kind of secondary counteraction in the proving of the homeopathic medicines, because we do proving in a very small dose like 30th potency or like this. So we learn so many things, though it is a theoretical part, doctrinal part. We as a practitioner feel that it is not of much use because we are in clinical working now. But I of the great opinion that going into this doctrinal part, we may learn so many important points and fundamentals which are directly affecting our clinical practice. It is directly implied on the bedside. We learn here the concept of dose much more than what we have learned so far. So I believe every one of us must be thinking to go through these aphorisms 1 to 70 in a very clinical way, so that our fundamentals become more stronger at the bedside. So far, we are able to complete by today aphorism number 66. I'm not taking
Next footnote, next aphorism 67. It's a very, very important aphorism, having a very vital footnote to be understood. It is almost a concluding aphorism in respect of the therapeutic law, which we have been discussing from aphorism 22 up to 66. So, in the next class, we will be concluding this therapeutic law concept, wherein we will learn that Hahnemann left aside two therapeutic methods. One of them is isopathy and allopathy. Hahnemann, of the view, never ever used these two. But then he kept in pocket and made us to learn the rest of the two are important. Law of similia, very, very important. And at times, antipathy important. And he's going to teach us when which is necessary, which is exclusively be used. So next class we will be learning aphorism 67, and after that we will be going ahead with 68 and 69, and in one class only we will be completing aphorism 70. That will be the summary of the whole doctrinal part so far we learned, and with that we will be able to complete one portion of the organon again. As I am telling you right from my lectures from the beginning, we are in a voyage, and the biggest distance we are going to complete as doctrinal part 1 to 70 aphorisms. Thereafter, we will plan regarding the practical part. That needs some different planning to go ahead with. So let us complete this one first, and then we will be starting with the practical part of the organon, which is much more important, but doctrinal part is nonetheless important for us. So let us see if we have certain comments, certain questions. Those who are listening me now, they may ask if they have certain questions with you. Please write me in the live chat. But then I'm just seeing if some comments are there. Mesh Vikram, what is he saying? Seriously deranged results of antipathy drug not considered into totality of symptoms. Then sunshine, sir. How can we differentiate by secondary action of medicines that whether it was antipathic treatment done or allopathic treatment done? Yeah, the first comment by Umesh, I must say something that when we are going to start with the theoretical part, when we are going to start with the practical part, we will be studying about aphorism 76, which is telling us the chronic artificial disease, that is iatrogenic disease, diseases caused by drugs. It does not require homeopathic treatment. So, keeping that in view, considering and having these symptoms which developed because of a drug, whether the primary symptom or the secondary symptom of the drug of antipathic nature, it is not going to be utilized in the totality of symptoms. We will be just having one separate class on totality of symptoms again, which we learned in aphorism 7. I wish every one of you to go back to aphorism 7 and find out
one of my lecture on that, things will be very clear to you. Then coming to the second point, Sunshine sir, how can we differentiate by secondary action of a medicine, that whether it was antipathic treatment done or allopathic treatment done? So when very simple secondary action is going to produce in the antipathic mode of treatment only. In allopathic mode of treatment as such, no such secondary symptom is going to come, because as you have learned from the example 65, for the worm an opposite secondary action reaction comes, that is colder. But in allopathy there is no such relationship. So if you just think over, you will be able to understand my point. Umesh has got something to say. After using long time opium for pain developed numbness is secondary action, but why not we consider into totality of symptoms, or if present symptoms? Because in homeopathy, when you think of totality of symptoms, we consider symptoms of the chronic miasms only, and not from any kind of wrong lifestyle, not from due to any of the drugs utilized for a longer time, because it is not the symptom of the patient, it is a symptom of the drug. Yes, we are able to see this symptom only in a patient, but when you find out that it is only produced by a drug, then it is not a symptom of the patient, rather expressed in the patient. It is not going to help at all. But you simply leave it aside, leave it, just leave it. Slowly and slowly, vital force will treat it. Read Aphorism 76, it will make you very clear. तो थोड़ा सा समझने की इस बात की जरूरत है कि अगर कोई भी सिम्टम दवा से प्रोड्यूस होगा, और हमेशा दवा से कोई सिम्टम प्रोड्यूस बहुत लॉन्ग टर्म यूज के बाद ही होता है, उससे पहले तक तो वाइटल फोर्स संभाल लेता है, उसको वॉश आउट कर देता है। लॉन्ग टर्म के बाद ही तो यूज होता है, ऐसा सिम्टम आता है। अगर उस सिम्टम को हमने टोटलिटी में कंसिडर करना शुरू कर दिया, तो फिर आप कहीं सही दवा पे पहुंच नहीं पाएंगे। ये वाली बात समझने के लिए जब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलेंगे, तो धीरे धीरे हमको ये सब बातें और बेटर तरीके से क्लियर होंगी। और आप सोचिए, कुछ और भी आपके सवाल रहे, मेरे को आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे इस वीडियो के, मैं फिर आपको और क्लियर समझाने के लिए कोशिश करूँगा। Thank you very much everyone for today, and we will continue in our next class, Aphorism 67 onwards. Thank you everyone. Thank you so much.